Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the online data structure class. What we will be doing today is to start the second online lecture on chapter 5, which is on hashing. We will look into the programming details of separate chaining. Here are the code blocks taken from your textbook that are type declaration for separate chaining hash table. If we walk through the declared types, first of all, typedef allows you to specify a new name for the data type, which is already defined in the C language. We have redefined integer type as element type and unsigned integer type as index. List node is a structure which in this case is a collection of two variables called element and next, where element is basically an integer and your next is a pointer which can be traced as list node pointer. Now defining structure with typedef is to avoid repeated usage of struct keyword. Hash table 1 structure, which in this case is a collection of two variables called table size and the lists. In your lab code, we are using array of lists instead of the lists. Please make a note of it. Where table size is basically an integer and array of lists is a pointer of type list. By this manner, we can allocate memory for hash table and further allocate memory for linked list in each cell of the hash table. Since our linked list implementation is using headers, we must allocate one head node per list in each cell of the hash table and set head node next pointer to null. We also have some functions declared here. Initialize table, for example, find, insert, and retrieve, which we will look into the definitions in our further slides. ये कोड ब्लॉक्स आपकी बुक में से लिए हैं। ये आपकी लैब का भी हिस्सा है। ये फ़ाइल जो टाइप डिक्लेरेशंस की है, पहले ये चीज़ समझ लें कि टाइप डेफ आपको डेटा टाइप जो सी लैंग्वेज में डिफाइंड है उनका एक नया नाम बनाने की इजाज़त दे देता है। इंट जो कि एक डेटा टाइप है, इसका एक नया नाम बनाया है और वो है एलिमेंट टाइप। इसी तरीके से अनसाइंड इंटीजर का एक नया नाम जो कि इंडेक्स बना लिया है। अब एक स्ट्रक्चर डिफ़ाइन किया है जिसका नाम लिस्ट नोड है और जिसमें दो वेरिएबल्स हैं, एक का नाम एलिमेंट और दूसरे का नाम नेक्स्ट। अब जो एलिमेंट वेरिएबल है उसका डेटा टाइप एलिमेंट टाइप है। बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि एलिमेंट टाइप जो है वो ऑलरेडी इंटीजर टाइप है। नेक्स्ट वेरिएबल उसको पोजीशन डेटा टाइप बनाया गया और पोजीशन डेटा टाइप जो कि एक स्ट्रक्ट लिस्ट नोड पॉइंटर है। अगर आप नोट करें टाइप डेफ स्ट्रक्ट लिस्ट नोड स्टार पॉइंटर बेसिकली पोजीशन, तो इसमें जो है स्ट्रक्ट लिस्ट नोड स्टार, इसका एक डेटा टाइप बना लिया गया है और उसका नाम दे दिया गया है पोजीशन। सो इसी तरीके से अगर आप टाइप डेफ पोजीशन लिस्ट नोट करें, इसमें भी
जो लिस्ट है वो एक सिनोनिम बना दिया गया है पोजीशन का। अब जो हैश टेबल स्ट्रक्चर है उसके भी दो मेंबर्स हैं, एक है टेबल साइज और दूसरा है द लिस्ट्स। टेबल साइज जो वेरिएबल है वो डेटा टाइप इंटीजर है, द लिस्ट्स जो है वो लिस्ट पॉइंटर है। डिक्लेरेशन टाइप्स में फंक्शंस भी कुछ डिक्लेयर्ड हैं, जिसमें इनिशियलाइज टेबल है, डिस्ट्रॉय टेबल है, फाइंड है, इंसर्ट है और रिट्रीव है, जो कि नेक्स्ट स्लाइड्स में डिफाइन हुए हुए। The function initialize table is an initialization routine for separate chaining hash table. It takes table size as input argument and return hash table data type. Variable h is declared as hash table and variable I as integer. In line 1, 2, and 3, you need to set minimum table size, else an exception will be thrown if table size is too small. In line 4, we are allocating memory for hash table structure. If your memory in that case is not enough, an out of space exception will also be thrown. Once hash table object is constructed, it has table value size to be initialized. If you enter the table value and it does not happens to be a prime number, then next prime number relevant to the input number will be returned, and that's done in your next prime function. जो initialize table function है input में वो integer data type accept करता है और return type में data type hash table करेगा। data type hash table का वेरिएबल h डिक्लेयर किया हमने, उसके नीचे ही हमने एक डेटा टाइप इंटीजर वेरिएबल i डिक्लेयर किया। उसके बाद हमारे पास एक इफ़ कंडीशन है जिसमें टेबल साइज़ लेस दैन मिनिमम टेबल साइज़। अगर तो आपका टेबल साइज़ जो है मिनिमम टेबल साइज़ से कम है, देन यू विल बी गेटिंग एन एरर। अब हमने हैश टेबल का टेबल साइज़ एलोकेट करना है ताकि हम हैश टेबल स्ट्रक्ट मेंबर्स, टेबल साइज़ और द लिस्ट्स की वैल्यू इनिशियलाइज कर सकें, और वो कंस्ट्रक्ट करेंगे हम बाय यूजिंग malloc स्टेटमेंट, जो कि एक डायनामिक मेमोरी एलोकेशन स्टेटमेंट है सी की। और एलोकेशन साइज़ जो है वो साइज़ ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ हैश टेबल है। अगर तो मेमोरी का इशू नहीं है तो फिर आपका जो मेमोरी है वो एलोकेट हो जाएगी। और स्ट्रक्चर जो हैश टेबल का है उसके अब दो वेरिएबल्स हैं जो आपने इनिशियलाइज़ करने हैं। फर्स्ट वेरिएबल जो है वो बेसिकली टेबल साइज़ है, और टेबल साइज़ को इनिशियलाइज़ करने के लिए हम फंक्शन यूज़ कर रहे हैं नेक्स्ट प्राइम नंबर। नेक्स्ट प्राइम नंबर जो फंक्शन है, अगर आप कोई नंबर इनपुट करेंगे तो वो आपको रिटर्न में जो भी फॉलो अप प्राइम नंबर होगा वो रिटर्न में दे देगा। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप 10 इनपुट करते हैं टेबल साइज़, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर फंक्शन जो है वो आपको 11 प्राइम नंबर रिटर्न करेगा। अगर आप 11 एंटर करेंगे तो फिर वो बेसिकली आपको 11 ही रिटर्न कर देगा, बिकॉज 11 इज़ अ प्राइम नंबर। The other variable in your hash table is the list pointer called the lists. The lists will be created by using the malloc statement or C command, which is a dynamic memory allocation. The size of the lists or array of lists will be the table size, and that's done in line 8. In line 9 and 10, if memory is not allocated for the lists, then out of space exception will be thrown. Once the lists is created,
We will allocate its header, a head node for each list sitting inside the cells of the hash table. If memory is not allocated, then an out of space exception will be thrown. Once the head nodes are created, we initialize each head node next pointer to null. Once done, your hash table is returned. The lists जो है वो एक दूसरा मेंबर है हैश टेबल का और उसको अब हमने कंस्ट्रक्ट किया है बाय यूजिंग द malloc स्टेटमेंट और द साइज़ जो रखा गया है उसका वो हैश टेबल साइज़ रखा गया। अगर मेमोरी एलोकेट हो जाती है तो आपको आउट ऑफ स्पेस एक्सेप्शन थ्रो नहीं होगा जब कंपाइल करेंगे कोड। वंस द अरे इज़ एलोकेटेड, अब हमें द लिस्ट्स के ईच सेल के अंदर एक हेड नोड क्रिएट करनी है और वो हम एक लूप लगाएंगे, फॉर लूप, जो कि इनिशियलाइज होगी 0 से टेबल साइज तक। ईच हेड नोड जो है वो स्ट्रक्ट लिस्ट नोड साइज की होगी, उसको भी हम malloc स्टेटमेंट लगा के कंस्ट्रक्ट करेंगे। अगेन अगर मेमोरी का इशू नहीं है तो फिर आप ये कंस्ट्रक्ट कर लेंगे और वंस डन ईच हेड नोड द लिस्ट्स के अंदर आप उसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो इनिशियलाइज कर देंगे इक्वल्स टू नल। The find function will locate the cell index using hash function. Once we have the array index, then a sequential search in that cell's linked list will be performed. Find function takes two arguments. First is the variable key, which is of data type integer, and the other is data type hash table variable h. We declare data type position as p and data type list as l. In line 1, list pointer l is assigned linked list from hash table h member, the list, and the list index is returned by the hash function, which uses remainder method. Basically, you input the key and table size into the hash function called hash, and it returns the hash value. The hash value is the list's array index, where the item could be found in the linked list by traversing the list. Thus, its address is assigned to L. In line 2, the position pointer P is assigned the address of L next, which is basically your head node next. In line 3, we have a while loop. The terminating condition of while loop is boolean of two true values. One of it is the position pointer not equal to null, and the other is element accessed by the position pointer not equal to the key. We keep on incrementing the position pointer next until we find the element or hit null. In other words, while loop will keep on iterating until one of the conditions becomes false and the loop terminates. The position pointer p is returned. जो find function है वो दो arguments input में ले रहा। पहला जो है वो है element type key और दूसरा argument जो है वो है hash table h और return type में position pointer है। अब फंक्शन के अंदर सबसे पहले जो है वो पोजीशन पॉइंटर p डिक्लेयर हुआ। उसके बाद जो है आपके पास लिस्ट पॉइंटर l है। जो लिस्ट पॉइंटर l है उसका जो एड्रेस है वो इनिशियलाइज किया है बाय इक्वेटिंग इट टू हैश टेबल के मेंबर द लिस्ट्स, जो कि बेसिकली एक अरे है। उस अरे में से एक इंडेक्स वैल्यू का रिटर्न लिया गया है हैश फंक्शन से।
हैश फंक्शन के दो इनपुट हैं, की है और टेबल साइज़ है। जब आप की और टेबल साइज़ इनपुट करेंगे तो आपको जो है रिटर्न में हैश जो है वो इंडेक्स देगा द लिस्ट्स अरे का। उस लिस्ट में जो हेड नोड का एड्रेस है वो आप असाइन कर रहे हैं लिस्ट पॉइंटर एल को। उसके बाद आपने पोजीशन पॉइंटर पी को इक्वेट किया है हेड नोड नेक्स्ट के साथ। लाइन 3 में अब हमारे पास वाइल लूप है। वाइल लूप की जो टर्मिनेटिंग कंडीशन है वो बूलियन है दो ट्रू वैल्यूज़ की। उनमें से एक जो वैल्यू है वो है पॉइंटर नॉट इक्वल टू नल, और दूसरी जो है वो है पॉइंटर जो एलिमेंट एक्सेस कर रहा है नॉट इक्वल टू द की वैल्यू। सो ईदर जो है कंडीशन अगर फॉल्स हो जाए तो ये लूप जो है टर्मिनेट कर जाएगी। वाइल लूप जो है वो बेसिकली हेड नोड के नेक्स्ट पॉइंटर से शुरू होगी और वर्स्ट के सिनेरियो में टेल नोड के पॉइंटर नल तक जाएगी इटरेट करते भी। अगर सेल एलिमेंट की वैल्यू मिल जाएगी तो सेल एड्रेस रिटर्न हो जाएगा, अदरवाइज नल जो है वो पी में रिटर्न होगा। The insert function will first locate the cell using hash function in order to check if the item exists. If the item does not exist, then it will insert the item as the first item in the chain of linked list. The insert function takes two arguments. The first is the data type integer variable key, and the second data type is hash table variable h, and return type is void. Variables POS and new cell are declared as position data type. You have variable L declared as data type list. Before we insert the key, we need to find if the key already exists in the hash table, which is checked by the function name find in line 1. If the key does not exist, then the return type will be null, which allows you to allocate memory for the new cell of struct size list node. If you are out of memory, then out of space exception will be thrown. If you have space, then on line 6 you want to assign list pointer L the address of the list in the lists by getting the hash value index from the hash function called hash. Since the node will be inserted after the head node in line 7, you will make the new cell next equals lnext. In line 8, we will insert the key value into the new cell. In line 9, we will make lnext, in other words head node next, equals new cell address. We are doing pointer manipulation for insert operation in linked list, and this you have already done in the linked list lab. Now what if in line 2 POS is not equal to null? Then it implies we have a duplicate key that was inserted before. Thus, if it's duplicate key, we do not insert. जो insert function है वो दो arguments ले रहा। फर्स्ट जो है वो है डेटा टाइप इंटीजर वेरिएबल की, और दूसरा जो है डेटा टाइप हैश टेबल और वेरिएबल है h। रिटर्न टाइप आपका इसमें है void। अब जो वेरिएबल्स पोस एंड न्यू सेल जो हैं डिक्लेयर हुए हैं पोजीशन डेटा टाइप, पोजीशन पॉइंटर्स हैं। आपके पास वेरिएबल l है जो कि डिक्लेयर्ड डेटा टाइप जो है वो लिस्ट का है, जो एक लिस्ट पॉइंटर है। अब इंसर्ट करने से पहले हमें ये चीज़ मालूम करनी है कि क्या ये जो की है जो हमने इंसर्ट करनी है
क्या ये टेबल में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है या नहीं। और उसको चेक करने के लिए हम फाइंड फंक्शन का यूज़ करेंगे लाइन 1 पे। अगर तो की एग्जिस्ट नहीं करती तो फाइंड फंक्शन जो है वो आपको रिटर्न टाइप नल देगा, और अगर की एग्जिस्ट करती है तो फाइंड फंक्शन जो है उस की नोड का एड्रेस आपको रिटर्न कर देगा, जो कि इम्प्लाई करता है कि की ऑलरेडी इंसर्टेड है। तो अगर तो ऑलरेडी हैश टेबल के अंदर वो की इंसर्टेड है जो हमने इंसर्ट करनी है, तो उसको हम इंसर्ट नहीं करेंगे। अगर की एग्जिस्ट नहीं करती हैश टेबल में, तो फिर हम एक नया सेल malloc स्टेटमेंट यूज़ करके एक स्ट्रक्ट लिस्ट नोड साइज़ का एक न्यू सेल क्रिएट करेंगे। और अगर आपके पास मेमोरी एम्पल ना हुई तो आपको आउट ऑफ स्पेस एरर का एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगा। वंस द न्यू सेल इज़ क्रिएटेड, अब न्यू सेल के अंदर जो वेरिएबल्स हैं, जो उसके मेंबर्स हैं, वो हैं एलिमेंट और उसका है नेक्स्ट एड्रेस, जो कि अब हमने असाइन करने। तो उसको असाइन करने के लिए अब जो वैल्यूज़ हैं वो हम लाइन नंबर 6 पे लिस्ट पॉइंटर एल इनिशियलाइज करेंगे उसका एड्रेस हेड नोड एड्रेस के साथ, जिस लिस्ट के अंदर हमने उसको इंसर्ट करना है। और वो जो लिस्ट जो है, अगर आप देखें इधर, आपके पास हैश फंक्शन है जो कि इंडेक्स बताएगा, की वैल्यू इनपुट और हैश टेबल साइज इनपुट आर्गुमेंट लेके रिटर्न में वो एक इंडेक्स देगा जो कि द लिस्ट्स अरे का इंडेक्स होगा। उसके अंदर वो एलिमेंट इंसर्ट होगा। एलिमेंट क्योंकि इंसर्ट होगा वो अब शुरू में ही होगा हेड नोड के बाद, तो उसके लिए जो है न्यू सेल नेक्स्ट जो है वो हेड नोड का नेक्स्ट असाइनमेंट कर देंगे, और न्यू सेल एलिमेंट इक्वल्स टू की हो जाएगा। और जो हेड नोड का एल नेक्स्ट होगा जो नंबर लाइन नंबर 9 में है, वो इक्वल्स टू न्यू सेल एड्रेस हो जाएगा। सो इस तरीके से हम ये एलिमेंट इंसर्ट कर देंगे। ये बेसिकली एक सिंपल लिंक लिस्ट पॉइंटर मैनिपुलेशन है इंसर्ट के लिए। As we increase the number of elements n in the hash table, more and more items will be stored in linked lists, thus slowing everything down. You will be needing more time to iterate for search and delete operations, starting from the head node all the way to the tail node for the worst case scenario. Also, increasing the table size allows you to hold more data in an efficient manner, but there is a limit to it. It turns out that the ratio of number of elements divided by the table size is an important quantity to analyze. This is called the load factor. Further to analyzing the performance of separate chaining hash table, the following inputs needs to be taken into account. Time to perform search is basically an addition of two terms, which equals the constant time required to evaluate the hash function plus time to traverse the list. Note that for separate chaining, the average length of a linked list is lambda. For chaining, lambda is not bound by 1. It can be greater than 1. Thus, for an unsuccessful search, we have to traverse the entire list, so we need to compare lambda links on the average. A successful search requires that about 1 plus lambda by 2 links be traversed, where 1 represents a guarantee that one link must be traversed, and lambda by 2 represents, on average, we need to check half of the other nodes while searching for a certain node. Further to analyzing lowering the load factor lambda
which equals number of elements divided by the table size, is a good thing from the time point of view. From the space point of view, lowering the load factor means increasing the table size. This can lead to large wasted space. A reasonable compromise is lambda approximately equals 1, which implies table size should be as large as number of expected elements in the hash table. In that case, search time will be roughly order 1. For separate chaining hashing, the load factor should be close to 1, although performance does not significantly degrade unless the load factor becomes very large. Linked lists could get long, especially when the number of keys are getting close to the number of cells in the array. It allocates and deallocates memory for linked lists, which causes slowdown in execution time. And the worst case when all the elements are hashed into just one linked list. Let's look at another method for resolving collisions by using open addressing. Separate chaining has the disadvantage of using linked lists that slows the algorithm down because of the time required to allocate new cells. In open addressing hashing system, all the data go inside the table. Thus, a bigger table is needed. If a collision occurs, we find the next empty cell and put the item there. Basically, relocate the key variable to be inserted if it collides with an existing key. That is, we store key at an entry different from hash value given by the hash function. Open addressing hashing resolves collisions by trying alternative cells or bins in the hash table. We keep on searching until an empty cell is found. Basically, it does not use pointers to linked lists. Cells of the hash table h0 of input x, h1 of input x, and so on are tried in succession in a systematic way in order to insert the element, where x is the input item to the hash table, such that h of index I equals summation of hash input x plus function f input I, then taking the remainder method, that is mod of table size, with f of 0 equals to 0 and index I going from 0 to m minus 1. The function f is the collision resolution strategy. There are three common collision resolution strategies, namely linear probing, quadratic probing, and double hashing. We implement linear probe by using linear search for an empty cell such that we can avoid a collision. If the physical end of the hash table is reached during performing linear search, we will apply wraparound such that once end of the hash table index is reached, we go right to the beginning of the hash table index and continue from there. Basically, your function f is a linear function of I, that is, f of input I equals I. Your h0 for input x equals hash value of input x plus 0. For h1 equals hash value of input x plus 1, and for h2 equals hash value of x plus 2, and so on. Cells are probed sequentially with wraparound in search of an empty cell. If you hit an end of the array while searching for the empty cell,
and you have not found it yet, loop back to the beginning of the array.